ओके, लेट स्टार्ट द लेक्चर अगेन। तो हम ये कह रहे थे आपके पास ये है यूनियन ए आई रनस फ्रॉम 1 to n इज कंटेन्ड इन ए, और ए आई इज डिसजॉइंट है ये मेंबर्स एस की, और आपको प्रूव करना है ये समीशन आई रनस फ्रॉम 1 to n म्यू ऑफ ए आई इज लेसर इक्वल टू म्यू ऑफ ए। और मैंने ये कहा कि यहाँ पर हम मोनोटोन प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि ये दोनों एस के मेंबर्स नहीं है। Okay, now let's now this thing we have done a theorem which states that this difference I runs from 1 to n, I runs from 1 to n. If ai's are the members of S, A is also the member of S, then A minus union I runs from 1 to n, can be expressed as the finite disjoint union of members of S. ये हमने किया है. This can be expressed as finite disjoint union of members of S. This is BI. I runs from 1 to M, where BI's they are in S. They are all in S, and they are also disjoint. Now, what is this union? What's the set A? हम देखिए A किसके बराबर हम लिख सकते हैं. What's this set A? A is equal to A is equal to A is equal to A minus union I runs from 1 to n AI, then union AI runs from 1 to n. पहले मैंने इसमें से यूनियन को बाहर निकाला फिर वापस एडजॉइन किया इसके साथ. ओके, सो these two sets are equal, but now this one, what's this? It's union BI runs from 1 to m, and this is union AI runs from 1 to n. This union and this one ये एक के बराबर है. अब यहाँ से जो यूनियन में जो सेट्स है ना वो सारे एस के सेट्स है. ए आईज तो है एस के और बी आईज भी एस के मेंबर्स है, और इनका जो यूनियन है होल यूनियन it is also the member of S. So we can apply mu on both sides. And they are also disjoint. BIs obviously these BIs they are also disjoint from AI because here we have A minus union AI. तो बी आई का जो बी आई में जो सेट्स है ना B1 B2 BI में जो सेट्स है दे आर ऑल डिसजॉइंट फ्रॉम AI. Suppose there is a common point between BI and AI. Say X belongs to BI as well as X belongs to AI. Then if X belongs to BI, it means that X belongs to A minus union I runs from 1 to an AI. ना अगर X BI में होगा तो यूनियन BI में होगा ना. अगर वो यूनियन बी आई में होगा, व्हाट इज यूनियन बी आई? यूनियन बी आई इज ए माइनस यूनियन आई रन्स फ्रॉम 1 to n ए आई. तो x इस डिफरेंस में फिर होगा. अगर x इस डिफरेंस में होगा तो इसका मतलब है कि x किसी भी ए आई में नहीं होगा. तो जो भी पॉइंट यूनियन बी आई में है वो किसी भी ए आई में नहीं है. यू कैन इजिली वेरीफाई दिस. सो दैट मीन्स बी आईज एंड ए आई दे आर ऑल्सो डिसजॉइंट विद ईच अदर, एंड बी आईज आर ऑल्सो डिसजॉइंट, ए आईज आर ऑल्सो. सो इट्स एक्चुअली द डिसजॉइंट यूनियन. A is equal to the disjoint union of the members of S, and on both the sides, left hand side as well as on the right hand side, they are all the members of S. So we can apply mu on both sides. So this gives mu of A is equal to mu of union BI runs from 1 to M, then union AI runs from 1 to n.
Now series of sets are disjoint. This is equal to summation I runs from 1 to m mu of bi plus summation, इसका सब हम अलग लिख देंगे, I runs from 1 to n mu of ai. But this thing is non-negative number, so it's greater or equal to summation I runs from 1 to n mu of ai. So therefore we have this summation I runs from 1 to n mu of ai is less or equal to mu of a. ये इसकी सेकंड प्रॉपर्टी आ गई. अब हमें थर्ड प्रॉपर्टी चेक करनी है. थर्ड प्रॉपर्टी, third property, sigma sub additive. Now we verify sigma sub additive property. Now we verify sigma sub additive property. Okay, this thing, so for this let's take a in S, and this an, it's a sequence in S such that this a is subset of union a n runs from 1 to infinity. This n is not a disjoint sequence, but we convert it into a disjoint sequence. We define, जैसे हमने किया है ना, जैसे हमने किया b1 is equal to a1, and in general we define bn plus 1 which is equal to an plus 1 minus union up to an, union I runs from 1 to n. Okay, then this bn is a disjoint sequence. Then bn, okay, bn is a disjoint sequence, is a disjoint sequence, and then bn is a disjoint sequence, it's a disjoint sequence, and this union bn is same as union a, and runs from 1 to infinity. Okay, this is a disjoint sequence. Now what's this bn? Again, also what's bn? bn is equal to an minus union ai runs from 1 to n minus 1. This is bn. An, it's a member of S, and a1, a2, an minus 1, they are also members of S. So this difference can be written as finite disjoint union of members of S, जो हमने अभी सेकंड पार्ट में किया है. So this is equal to, अब क्योंकि इसमें n है तो n हमें साथ साथ रखना. It can be written as like this c1 n because of this bn. Okay, इसका आप ख्याल रखिए, क्योंकि मैंने bn के लिए लिख दिया ना, b1 के लिए भी अलग होगा, b2 के लिए अलग होगा, b3 के लिए अलग डिस्जॉइंट यूनियन होगा, तो उसके लिए मैंने n का यूज किया. c1n यूनियन c2n यूनियन c k n. So that means it's equal to union cin, where I runs from 1 to kn, and these cins, they are all members of S, and they are also disjoint. Cin intersection Cjn is the empty set.
clearly this Bn, it's clearly subset of An, because we are removing something from An, then this resultant set An minus that set, it is equal to Bn. So Bn is actually subset of An. So what is this Bn? This Bn is actually this set. Clearly we have this union I runs from 1 to Kn Cin, which is equal to Bn, and it's subset of An. ये ठीक है? हाँ सर। अब देखिए आप सेकंड प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते, ये जो है ना C1n, C2n, C3n है ना, CKn, ये सारे मेंबर्स S के हैं और डिसजॉइंट है, सारे मेंबर्स S के हैं और डिसजॉइंट है, और इनका यूनियन किसका सबसेट है? An का, और An भी S का ही मेंबर है। मोनोटोन प्रॉपर्टी ना, नॉट मोनोटोन प्रॉपर्टी, बाय सेकंड प्रॉपर्टी जो हमने अभी वेरीफाई की, सेकंड प्रॉपर्टी मैं यहाँ पर लिखूँ। सेकंड प्रॉपर्टी हमने क्या क्या लिखा था? अगर ऐसा होगा आई रनस फ्रॉम 1 to n इफ इट इज सबसेट ऑफ ए, और ए आई इज डिसजॉइंट होगी और ये सारे मेंबर्स एस के होंगे, ए भी एस का ही मेंबर होगा, देन दिस थिंग होल्ड्स, जो हमने अभी किया चेक, इज लेस आर इक्वल टू म्यू ऑफ ए, आई रनस फ्रॉम 1 to n, है ना, अभी किया ना हमने इसको। यहाँ पर एग्जैक्टली वही है, यहाँ पर ए आई की जगह पर सी आई एन है, और जो सेट ए है जिसका ये सबसेट है उसकी जगह पर आपके पास ए एन है। बाय सेकंड वी हैव, आप उस इक्वेशन का नाम भी सेकंड रख सकते हो। अगर आपको प्रॉपर्टी की वजह से कंफ्यूजन होगा ना, आप मेजर की सेकंड प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हो या इसकी सेकंड, इसमें कंफ्यूजन होगा ना, तो आप डायरेक्ट इसका नाम रखो इस इनइक्वालिटी का सेकंड। सो बाय सेकंड वी हैव दिस, ये सम होगा यहाँ पर। अब समेशन आई रनस फ्रॉम 1 to Kn म्यू ऑफ Cin is less or equal to mu En, is less or equal to mu En. Now we since we have this A, it is subset of union An runs from 1 to infinity, and which is equal to the union Bn runs from 1 to infinity. So it means that A is equal to the A intersection the bigger set. Okay, and this can be written as union n runs from 1 to infinity, union n runs from 1 to infinity Bn intersection A, Bn intersection A. So this thing is true, but then this Bn, what's Bn? जो हमने अभी बताया आपको, Bn क्या है? This Bn, its union I runs from 1 to Kn Cin, है ना? This is your Bn. So this is equal to union n runs from 1 to infinity, then union I runs from 1 to Kn Cin intersection E. This is a disjoint union. This is a disjoint union. It's a double union and it's a disjoint union. अब C1 and C2 वो तो है ही disjoint. फिर जब आप n को वैरी करोगे, n1 और n2 लोगे, क्या C11 और C12 क्या वो भी disjoint की? वो भी disjoint होगी। उसका रीज़न ये है, क्योंकि Bn आपस में disjoint है। Bn is a disjoint. B1 intersection B2 is the empty set.
तो विथ रिस्पेक्ट टू एन भी डिसजॉइंट है, विथ रिस्पेक्ट टू आई तो है ही डिसजॉइंट ये, है ना. विथ रिस्पेक्ट टू आई C1n C2n C3 वो है, बट विथ रिस्पेक्ट टू एन दे आर आल्सो डिसजॉइंट बिकॉज Bn इज अ डिसजॉइंट. So it's a disjoint union. This thing is your A actually. A is equal to this. So it's a countable and disjoint union. We can apply the sigma additive property of mu because mu is a major. Mu of A it will be equal to summation. It will be equal to double sum now. And then from what? Yes, it will be equal to summation n runs from 1 to infinity summation I runs from 1 to kn, 1 to kn mu of Cin intersection A by sigma additive property of major mu. And this one it's less or equal to because Cin intersection A is subset of Cin, है ना, ये subset है Cin का, so it's less or equal to summation n runs from 1 to infinity summation I runs from 1 to kn. This I runs from 1 it's mu of Cin, mu of Cin. And these CINs they are disjoint. Okay, this sum ये हमने अभी लिख दिया, ये जो सम है ना इसका नाम आप सेकंड रखिए. ओके, थर्ड रखिए इसका नाम आप. Summation I runs from 1 to kn mu of Cin is less or equal to mu of An, is less or equal to mu of An. So this sum is less or equal to mu of this one. This is less or equal to summation n runs from 1 to infinity mu of An by third. So thus this holds. Thus mu of A is less or equal to mu of union An runs from 1 to infinity. So in particular यहाँ पर क्या होगा, इन पर्टिकुलर अगर A यूनियन के बराबर होगा, यूनियन An runs from 1 to infinity, दिस इज जनरल, इसमें ये डिसजॉइंट नहीं, इट्स ऑलवेज लेस आर इक्वल टू समेशन, सॉरी ऑन दिस साइड इट्स सम एक्चुअली, इट इज समेशन n runs from 1 to infinity mu of An. So this thing holds. And this property is actually called sigma subadditive property, this one. If A is any sequence in S such that union is also in S, then in particular if अगर ऐसा होगा, अगर union An n runs from 1 to infinity, ये पहले S में होना चाहिए, then this thing holds. So this proves that part. Now conversely अगर ये तीनों प्रॉपर्टी आपके पास होगी, म्यू मेजर है, that's very simple, वो आप easily calculate कर सकते हो. That's you have to apply this property actually for this. तो आपको सिर्फ क्या चाहिए, आपको ये प्रूव करना है, म्यू ऑफ यूनियन डिसजॉइंट यूनियन n runs from 1 to infinity is equal to summation mu of An runs from 1 to infinity, मेजर के लिए है ना. कन्वर्स ये आपको प्रूव करना है, म्यू मेजर मतलब म्यू की ये प्रॉपर्टी, म्यू इज सिग्मा एडिटिव, दिस एन इज अ डिसजॉइंट सीक्वेंस. इसमें देखिए एक रिवर्स एक इनइक्वालिटी तो आपके पास गिवन है, म्यू ऑफ यूनियन n रनस फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी एन इज लेस और इक्वल टू दिस थिंग. इसी अब आपको रिवर्स इनइक्वालिटी करनी है प्रूव. रिवर्स इनइक्वालिटी के लिए आपको इसकी सेकंड प्रॉपर्टी का यूज करोगे, वहां से रिवर्स इनइक्वालिटी आ जाएगी. सो दैट्स एन होम असाइनमेंट फॉर यू, वो आप देख लीजिए. ओके चलिए.